Good afternoon, sir. Sir, good afternoon. Dr. Abhijit Sarnaik, sir, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Thank you, sir. I made Dr. Bedre sir co-host, so he can unmute himself. Okay. Okay, sir. His HR madam is present. Now she is joining. Sir, good afternoon and welcome.
Yes, Avchar madam joined with us. Good afternoon, all. Good afternoon, sir. Ma'am, are we waiting for someone? No, sir. Uh, Everyone. Yes, sir. Hello, Now, am I audible? now, sir. Yes, 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 you you are are audible. audible. But you are not audible to me. Madam, you are not audible. You are audible to others. Sir, am I audible to you? Am I audible? Am I sir? audible to you? Yes, sir, you are audible. But I'm not able to listen to you properly. Let me join again. Yes, yes. One minute. One minute. I think there is problem from Dr. Bedre sir's. Might be some internet issue or something else. Technical issue. Yes. Sir, you are audible now. Hello. Hello? Sir, you are audible. Your mic is mute, sir.
Am I audible too, sir? सर आवाज येतोय का माझा? हा येतो ना मॅडम, आम्हाला येतोय आवाज तुमचा. सरांना नाही पोहोचत आहे का बेद्रे सर? सरांचा तिकडून म्हणजे आवाज येतो पण आपला आवाज त्यांना जात नाही. Just wait for a couple of minutes. कॉल केला सरांना? केला सरांना कॉल, सरांच्या तिकडून थोडासा प्रॉब्लेम. ओके ओके ठीक आहे, असं द्या ना. Now just try to respond to me. Yes sir, आवाज येतोय का? Now I am able to listen to you. Yes, it's okay. गुड आफ्टरनून सर. Good afternoon. Good afternoon sir. Thank you. Good afternoon, everybody. Shall Sorry we for begin, the sir? technical disturbance that we had to face. It is part and parcel of these systems, Yes, online yes. systems. Yes. Certain things are beyond our control. Yes. Yes. Are we waiting for someone? No sir, almost all joined. Shall we begin? Yes, we can. Yes. Yes. Good evening, one and all. I welcome you all in the online national level 1 week faculty development program on implementation of national education policy, challenges and opportunities in HEIs, organized by Internal Quality Assurance Cell of Nutan Vidya Mandir Education Societies, led Sau Kamaltai Zamkar, Mahila Mahavidyalaya, Parbhani, Maharashtra State. Over here, this is the valedictory program of the online FDP, and the dignitaries of the valedictory program are
Honorable Dr. Sangeeta Auchar Madam, Vice Principal, Late Sau Kamaltai Zamkar Mahila Mahavidyalaya Parbhani, and the President of the Valedictory Program. Chief Patrons are Honorable Shri Hemantrauji Zamkar Sahib, President, Nutan Vidya Mandir Education Society Parbhani. Honorable Advocate Shri Kiran Rauji Subedar Sahib, Vice President, Nutan Vidya Mandir Education Society Parbhani. Honorable Dr. Abhayji Subedar Sahib, Treasurer, Nutan Vidya Mandir Education Society Parbhani. Honorable Shri Vijayarauji Zamkar Sahib, Secretary, Nutan Vidya Mandir Education Society Parbhani. Honorable Dr. Sanjay Ji Takalkar Sahib, Joint Secretary, Nutan Vidya Mandir Education Society Parbhani. All the resource persons of the online FDP, Dr. V.B. Patil Sir, Dr. Shankar Sir, Dr. Pabrekar Sir, Dr. Laturkar Madam, Dr. Dharmadhikari Madam, and today's chief guest and resource person, Dr. R.T. Bedre Sir, Professor Director, UGC-HRDC, Dr. Hari Singh Gaur, Sagar University, Sagar, Madhya Pradesh, and all the participants who joined us almost from all the states of India. I welcome you all on behalf of my college. At first, I request Dr. Abhijit Sarnaik Sir to play the college song. Dr. Abhijit Sarnaik Sir. It's not audible, madam, the song? Yes, yes, yes. Wait a minute, madam. गीत गाऊया ज्ञान मंदिरात मानवतेचे गीत गाऊया ज्ञान मंदिरात समतेची ही ज्योत लावूया ज्ञान मंदिरात मानवतेचे मातृभूमीचा भव्य वारसा जिजाऊ तारा मदर तेरेसा मातृभूमीचा भव्य वारसा जिजाऊ तारा मदर तेरेसा सावित्रीची ज्योत लावूया ज्ञान मंदिरात मानवतेचे गाऊया ज्ञान मंदिरात
होया कष्ट करण्या स्वराज्याचे सुराज्य करण्या सज्ज होया कष्ट करण्या आशेचा हा दीप लावूया भयान अंधारात ज्ञान मंदिरात मानवतेचे गीत गाऊया ज्ञान मंदिरात इंदिरासवे वीरमाताना कमलाताई जामकराना इंदिरासवे वीरमाताना कमलाताई जामकराना वाहू आदरांजली स्वरातुनी ज्ञान मंदिरात मानवतेचे गीत गाऊया ज्ञान मंदिरात समतेची ज्योत लावूया ज्ञान मंदिरात मानवतेचे गीत गाऊया ज्ञान मंदिरात ज्ञान मंदिरात ज्ञान मंदिरात Thank you, Dr. Abhijit Sarnaik, sir. Actually, I would like to say about this song. This song is composed by Mr. Jairam Gangao, sir, former associate professor and head Department of History of our college, and Dr. Pallavi Kulkarni, madam, associate professor of music of our college, composed the music. So thank you, ma'am, and thank you, Dr. Abhijit Sarnaik, sir, for this wonderful song. Now I am here for the introductory speech as well as for report reading. At first, I would like to introduce the FDP. Actually, the idea of organizing faculty development program came in the mind of our ex-principal, Dr. Avinash Sarnaik, sir. He started this activity in the year 1999. Every year, our college organizes FDP at the beginning of the academic year, that is from 17th June to 23 June, for the benefit of all the teachers. During this period, the teachers have no lectures and needs a kind of orientation before launching themselves for the classes. So this activity continued till today, and this activity is called the best practice of our college. Initially, this activity was limited to our college teachers only. We invited eminent research persons for deliberations on various topics. These resource persons were from various fields, for example, education, medical, psychology, industry, and so on. And the objectives of the organization of FDP are, the FDP intends to facilitate upgradation of knowledge, skills, and opportunities for induction training to teachers employed in various fields, to make aware about new or changing rules, regulations, provisions about administration and academic activities, to impart innovative teaching techniques in teachers, and to introduce teachers with current trends and latest information in their subjects. During the year 2020-21, we organized this activity on online mode due to COVID-19 pandemic situation, and I feel proud to say that we received a huge response almost from all the states of India for this online FDP. And this year also we have organized this activity on online mode, and this time also we have received a huge response from the for this online FDP.
approximately 680 participants registered for this FDP, and we are trying our best to give a delicious feast for the participants. Daily 100 participants were present in Zoom, and 153 participants were present on YouTube, and they are taking advantage of this online FDP. Actually, the FDP organized during 24 August to 30th August 2022, and on the very first day, Dr. B.B. Patil sir, means on 24th August, Dr. B.B. Patil sir, who is in charge, Pro Vice Chancellor, Punya Shlok Ahilya Devi Holkar, Solapur University, Solapur, inaugurated the FDP, and he delivered a keynote speech on NEP catalyzing quality research. On 25th August, Dr. Shankar sir, advisor IQAC cluster and retired principal, A.N. Rao College, Gudivada, Andhra Pradesh, delivered his eloquent speech on NEP 2020, the road ahead for higher education in India. On 26th August, Dr. P.N. Pabrekar sir, senior advisor, RUSA, Higher and Technical Education, Government of Maharashtra, delivered his speech on some views on promotion of Indian languages, arts and culture. On 27th August, Dr. Vani Laturkar madam, who is a professor as well as Dean, School of Commerce and Management Sciences, and IQAC Director, Swami Ramananda Tirth, Marathwada University, Nanded. She delivered her expert talk on overview of NEP. Then on 29th August, Dr. Ruta Dharmadhikari madam, who is Associate Professor and Head, Department of English, LAD College and RP College for Women from Nagpur. She delivered her talk on skilling graduates the NEP way, a case study of LAD College. And Dr. R.T. Bedre sir, Professor Director, Dr. Hari Singh Gaur, Sagar University, Sagar. Now today, he is going to deliver his expert talk on decolonizing the higher education and NEP. So in this way, we organized this FDP. I am here for the introduction of today's chief guest and today's resource person, Professor Dr. R.T. Bedre sir, who is Director UGC-HRDC, Dr. Hari Singh Gaur, Vishwavidyalaya, Sagar. Dr. R.T. Bedre sir graduated from Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, affiliated college in 1994 with English, History and Public Administration as special subjects. He did his master's in English from Maharashtra Udaygiri Mahavidyalaya Udgir, affiliated to the same university in 1996 with the gold medal. As far as his research degree is concerned, he completed his MPhil degree from Madurai Kamraj University, Madurai in 2005 in distance mode. Bharati Vidyapith Pune conferred him the doctoral degree for his thesis, The Dramatic Art of Girish Karnad, a Critical Study in 2009. He completed 3 minor research projects sponsored by UGC, 1 research project financed by SRT University, Nanded, and 1 research project financed by ICSSR, and 1 major research project sponsored by UGC. 10 candidates have been awarded degree of PhD with him as the supervisor. 4 candidates earned the degree of MPhil under his research guidance. He has published, actually he has authored 7 books. He also wrote, he has also written 1 play in English and 2 short stories in Marathi. He has edited 4 books. His more than 50 papers have been published in journals, conference proceeding. He has contributed his articles on higher education issues in the University News, published Association of Indian Universities, New Delhi. He started his career as a lecturer in English in August 1996 in ACS College, Gangakhed, District Parbhani, Maharashtra. He moved to Sri Pandit Guru Paradikar Mahavidyalaya, Shirsala, District Bid, Maharashtra as a full-time principal in September 2013. And now sir has been serving at Dr. Hari Singh Gaur, Vishwavidyalaya, Sagar, Madhya Pradesh as the full-time director of UGC-HRDC since October 2019. And his areas of interest are Indian English drama and higher education in India.
I welcome you, sir, on behalf of my college, and I request you to deliver your expert speech on decolonizing the higher education in India and NEP. Dr. R.T. Bedre, sir. Thank you, ma'am. Before I proceed, let me know the composition of the audience, because I don't know whether I have to continue in English or in mixed way, because we are aware of the fact that no single language can satisfy all Indians. So just let me know how to be bilingual or English only, because I don't know the Bilingual. composition of the audience. Yes. Bilingual, bilingual. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Hindi and English. Yes, yes. Well, that is the thing that we have to do already. Yeah. और सबसे पहले तो मैं लेट कमलते जामकर महिला महाविद्यालय के IQC सेल को बधाइयाँ देना चाहूँगा. I would like to congratulate it for organizing an FDP on such an important topic, because we know that almost in July 2020, our cabinet of the union government approved the NEP 2020, and in some states, its implementation has begun. But some states are in the process of the preparation only. As we can say in case of Maharashtra, I think few months back, a committee was set up. If I don't go wrong, I think the name is Professor Raghunath Mashelkarji is the head of that committee, which will now have so many meetings, and then they will prepare some guidelines, some roadmap, how to implement the provisions or the what we can say are the missions, the ideas, schemes that have been laid down in NEP 2020. तो आप सारे लोग इस बधाई के पात्र हैं. सबसे पहले तो आपके मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट श्री ऑनरेबल हेमंत जानकर जी and colleagues, at the same time Principal Dr. Vasan Bhosle ji. Then I can see the rich galaxy of the resource persons, among whom we have Professor P.B. Patil ji, Pro Vice Chancellor from Solapur University, Solapur, which recently named as Punya Shlok Ahilya Devi Solapur University, Solapur. Then Dr. P.N. Pabrekar ji, Senior Advisor to RUSA, Government of Maharashtra. Then Professor Vani Laturkar ji from Nanded. Then Dr. Ruta Dharmadhikari ji from Nagpur. Very well-known figure among us, Dr. Sangeeta Auchar ma'am, Vice President and who is chairing this session. And of course, Prabha Lokari ji, Coordinator of IQC, and all my dear participants. Now, it is quite certain that few things that I am going to talk on must have been discussed in detail, because 24 to 30 minutes, some 5 to 6 days are gone. I hope that the same participants were attending the sessions every day. That possibility cannot be ruled out in online mode. And sometimes it used to take place in class also, particularly in rural colleges. Those students who attend some class yesterday do not come tomorrow. And the teacher had to repeat so many things for a good number of times. So that possibility is still there in online mode also. So anyway, NEP 2020 draft, which ran into almost 450 plus pages, and its final document, which appeared in 2020, runs into 66 pages in English version. And it is said that
this policy appeared after some 35 years. In the beginning, it was called as New Education Policy. Lately, it is being called as National Education Policy. The names have been changing. As there is a practice, there is a trend of changing the names. And one thing, in the first year, in 2020 and 21, we can count calendar year or academic year. In that calendar year, so many webinars, so many ceremonies, I should say, because calling them webinar would be rather difficult, rather bold statement. Those were functions, those were ceremonies, those were eulogies in the praise of this NEP 23. And one sentence I heard quite a good number of times. एक सेंटेंस को बार बार किसी भी फंक्शन में हम सुनते थे और वो सेंटेंस था कि भारत की पहली भारतीय द्वारा भारतीयों के लिए बनाई गई पॉलिसी। तो इस सेंटेंस को सुनकर बहुत सारे सवाल दिमाग में आते कि भाई इससे पहले जो पॉलिसी हमने बनाई थी, शायद वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी हो 1948 का हो, या फिर डॉक्टर कोठारी कमीशन हो 48 का, बाद में 71 में आसपास आचार्य राममूर्ति आयोग आया था, बाद में प्लान ऑफ एक्शन आया था 86 में, then in the beginning it came in 1986 and then it started its implementation in 1991, and then lately in the first decade of the 21st century we have had a very significant commission, that was National Knowledge Commission, NKC, that was headed by Sam Bedre. And if you have an opportunity to go through that, you will find that a good number of provisions that we find in this NEP 28 document are very well phrased, very well defined. So in that sense, we cannot say it is a new education policy. Of course, it is a national education policy. अब सवाल ये भी बनता है, आचार्य मैम, I would like to just make one request. Please let me know how much time I have with me. Yes, sir. How much time I have with me? Because this is a 45 valedictory minutes session. are as per your Okay. wish. No problem at all. No. Yeah. This is valedictory session, and we know what kind of history is there in valedictory session for certificates and other things. Because the speaker is new, he may be excited, but the participants, I hope, are the same, and Yes, they absolutely. may not be having that courage to listen to the people. Anyway, when Dr. Lokariji approached me for this, I just said that I would talk on decolonization or mission decolonization of higher education of India in this particular policy. But when I went to the brochure ma'am provided, I thought that I should just modify my talk. And I would just underline what challenges in the implementation of NEP 2020 are. पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, पॉलिसी तो कोई भी बुरी नहीं होती। 48 की भी पहली थी, वो भी ठीक थी, 64 की थी, वो भी ठीक थी, 71 में आई, बहुत सारे आगे उसमें बदलाव हो गए, सब हुआ, लेकिन नॉट अ सिंगल पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड इन टोटल। उसमें जो हमारे टारगेट्स थे, उसमें जो हमारे गोल थे, हम उन्हें कभी भी पूरा नहीं कर पाए। अगर हम उसे कर पाते तो शायद हमें ये चीजें बार बार रिवाइज करने की जरूरत। जैसे कि एक चीज हम हमेशा सुनते हैं, राइट फ्रॉम 64 or perhaps University Education Committee, from that date, there is a recommendation of education policy that there should be a higher education commission or higher education service commission. जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में MPSC है या सेंटर में UPSC है, in the same way there was a recommendation that there should be a higher education service commission, but that recommendation is still pending. So whatever the thing is,
तो हम जरा बात करते हैं थोड़ी से आगे की भाई चलो पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी हम कहते हैं कि बुनियादी चेंजेस करने की बात की है, हमें टर्न बैक भी करना है, आगे भी बढ़ना है. इट इज अ मैरिज, इट इज अ वेल्डिंग ऑफ मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन. अगर हम उसके गोल देखते हैं तो देयर आर वंडरफुल गोल्स. लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा डीकोलोनाइज को बिना छुए आगे नहीं जाना चाहता. क्यों? Why we call this is the policy, this is the first policy made by the Indians and for the Indians and truly Indian industry. Of course, to some extent, this statement is valid. The statement is. Why should I say? There is no doubt that the history cannot be undone. हम तारीख को मिटा नहीं सकते. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगभग 200 साल हम पे राज किया. And that was not a political rule only. That was not a financial rule only, or political rule for the exploitation of finances and riches of India. It was not limited to that. It was a cultural colonization also. And please remember, education is the best tool to colonize everybody. हम कई बार कहते हैं कि education is the best tool for social transformation. In the same way, the British rule, now when we use the word British rule, we have to divide into two parts. Up to 1857, it was company rule, we can say, company sarkar, that word used to be used there. And afterward, the British Empire, that we were directly controlled by the crown of the England. ये सारी चीजें. अभी आज जितने भी हम में ईमेल देखते हैं, जितने भी हम उसमें फॉल्ट देखते हैं हमारे एजुकेशन पॉलिसी में, तो एक नाम हमारे सामने बार बार आता, दैट इज लॉर्ड मेकल. आज कुछ भी हो जाए, लॉर्ड मेकल इसके लिए जिम्मेदार है. बेचारा मर के भी लगभग 200 साल हो चुके होंगे, दफन हुआ है बेचारा, उसकी हड्डी भी नहीं बची होगी, लेकिन फिर भी आज हम उसको बार बार खोजते हैं. We are cursing him again and again, and I am confident that so long as we are there, so long as education is there in India, he will be cursed. Poor fellow had to bear all this. Now, when this issue appeared, the introduction of English education in India appeared around 1935. जैसे हम इसको that wood or something, okay? मैकॉले का एक चार्टर आया था. White up here. सबसे पहला मुद्दा यह था कि हमने उन्हें इंग्लिश एजुकेशन लाना क्यों. Dear friends, if some of you have history background with you, you must know, or you perhaps know it, that before the colonial rule in India, before the English education appeared in India, there used to be madrasas and gurukuls. There were madrasas and gurukuls. And the company sarkar used to give 1 lakh rupees grant for 1 year to all these madrasas and gurukuls. So this Macaulay thought, why should we pay them? इनकी शिक्षा हमारे किसी भी काम में है तो हम उसको क्यों खर्च करें. सिर्फ बात उतनी नहीं थी, इसके आगे जाके उसकी सोच ये थी कि that I would like to share some screen with you. 1 minute. Is it visible to you, ma'am? No, sir. No, sir. Not yet. One minute. It is taking time. चलो जो भी हो. Now what he says. Yes. Now is it visible, I think? Yes. Is it visible now?
No, not yet, sir. The process is going on, sir. It will take a few seconds. Maybe. Now it is visible, sir. Yes. Okay. Now this is the paper cutting from directly Lord Baker. Why this particular document has become so relevant, so important? Because of its content. इसने जो उसने कहा, आप इसको लेकर भी बहुत सारे विवाद हैं कि whether he wrote it from India or he was present in England at that time. And what he said, आखिर उसने इंग्लिश से लाना क्यों? See, in the first part of its letter or first part of this paragraph, he praises India. What he says, I have traveled across the length and breadth of India, and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber. यूरोप में पता आपको इंडिया का परसेप्शन क्या था? ये भिखारियों का देश है, ये नंगे पुंगे साधुओं का देश है, ये सपेरों का देश है. That was the perception the West had for India. आज भी ज्यादा पिक्चर बदला नहीं. आप काशी जाइए, कहीं और जाइए तो नंगे पुंगे साधु और गांजा मारते साधु आपको वहां मिल जाएगा और सपेरे भी मिल. But when he traveled in India, he found that this is not the complete truth. And what he says, such a high caliber, such a moral values there are. लेकिन उसके आगे जाके क्या कहता है वो? He says that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation. रीढ़ की हड्डी तोड़े बगैर हम इन पे राज नहीं कर सकते. What is this रीढ़ हड्डी? That is backbone. That is which is her spiritual and cultural heritage. इसको ब्रेक करना है. उसके साथ साथ क्या कहता है? Therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, and they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. इसके बिना हमारा काम नहीं चलता. जैसे हम सारे लोग जानते हैं कि शायद मैंने कहीं पढ़ा है कि उस वक्त भी देश लगभग 100 का लगभग maybe 30 करोड़ और more than that population was there. लेकिन आपको जानकर ये मतलब ताजुब होगा कि कभी भी अंग्रेज ऑफिसर की तादाद यहाँ 5-10 हजार के ज्यादा ऊपर नहीं थी. नेवर. ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार ब्रिटिश लोग थे. Then it is wonderful thing how they ruled such country, such a big country. So that the secret of their success lies in education. As we know that they developed a class of the middlemen, those who will work at the job of translators between the British officers and the masses. अब उसका असर क्या हुआ? I must say that the British government succeeded in this plan 100%. उसके आगे जाके बात हो जाती है कि देख लीजिए, the British succeeded in convincing that the social, educational, and political order of the subcontinent were absolute against their own. Naturally, और चलो मैं इस पर पढ़ता नहीं, just tell you. उनको एक क्लास बनाना था, जो क्लास समझी कि जो भी फॉरेन का है, जो भी ब्रिटेन का है वो अच्छा है, जो हिंदुस्तान का है वो खराब है, वो सेवेज है, वो क्या कहते हैं उनको अनकल्चर्ड है. शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा कि देयर वाज वन टर्म व्हाइट मैन बर्डन. आप में से कुछ लोगों ने इस टर्म को सुना होगा, व्हाइट मैन बर्डन. एंड द यूरोपियंस रूल्ड ऑलमोस्ट 1/3 or 2/3 part of the world with the same theory कि भाई we are chosen ones. हमें ईश्वर ने चुना है, हमें ईश्वर ने सेलेक्ट किया है कि जाओ दुनिया में जाओ, लोग अंधकार में जी रहे हैं, मतलब
अनकल्चर्ड है, सेवेज है, उन्हें जाइए, पढ़ाइए, सिखाइए और उन्हें क्या कहिए, उनको एनलाइटन कीजिए. एंड अंडर दैट प्रिंसिपल द यूरोपियन वर्ल्ड रूल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन उसकी दूसरी बात ये थी, एक ऐसा क्लास पैदा हुआ बाद में जो सिर्फ ब्रिटिश एजुकेशन को अप्रिशिएट नहीं करता था, बल्कि वो अपने खुद के नेटिव कल्चर को हेट भी करता था, उसमें बदलाव लाना चाहता था. अब मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा. वी मस्ट नो दैट Raja Ram Mohan Roy introduced or pressurized the government of India to bring that act against Sati Pratha. We know that. British were not ready to interfere your system. Never. It was the Indians. It was the English educated Indians. They wanted this change. तो उसको भी हमको कॉलोनाइज माइंडसेट में देखना पड़ेगा. उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि हमारी जो भी फोर फ्रंट है फ्रीडम स्ट्रगल की, फोर फ्रंट हम जिसको कहते हैं, महात्मा गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, या फिर बहुत सारे लोग हैं. मोस्ट ऑफ देम गॉट देयर एजुकेशन इन इंग्लैंड, मोस्ट ऑफ देम. और जो सेकंड जनरेशन भी थी उसमें, जो हम कहते कि जो those who could not afford to go there, they were got education in the university. Those were established after 1850. तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारे आजादी की पहली जनरेशन कहते हैं, उसके बाद जो पॉलिटिक्स में जनरेशन आई वो भी इंग्लिश एजुकेशन की पैदाइश थी, और उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी आई वो भी इंग्लिश एजुकेशन की पैदाइश थी. तो नेचुरली दैट कॉलोनियल लेगेसी वाज कैरिड फॉरवर्ड. In that sense, we can say that whatever education policy we have, it is colonial. तो उसको decolonize करने की बात यहाँ सबसे पहली बार की. We know that there are attempts to revive our old culture. Now let me come to this point. What goals are there and what challenges are? आप में से I believe that आप में से सारे लोगों ने इसको पढ़ा. What does it say? The policy says that it wants to raise its GR 50% by 2035 from 27.1 of today. अगर हम AISHE का डाटा देखते हैं, क्योंकि AISHE एवरी ईयर डाटा पब्लिश करता है, अगर 1920 का भी हम डाटा देखते हैं तो हमारा GER, आई थिंक आई डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाट GER इज देयर. सिंपल भाषा में 18 से 23 में जो भी यूथ है उनमें से कितने बच्चे हायर एजुकेशन में आ पाते, दैट डिफाइन अवर GER. और हमारा GER 27.1 है, लास्ट ईयर का है, मे बी द ईयर बिफोर लास्ट 27.1. और उसको हमें 2035 तक 50% बनाना है. अगर हम आज की बात करें, फिगर को याद करें, 27.1 मतलब 3.85 करोड़. दिस इज द नंबर ऑफ आवर हायर एजुकेशन एनरोलमेंट. आई रिपीट, 3.85 करोड़ और 84 करोड़, 3 करोड़ 84 लाख बच्चे हमारे हायर एजुकेशन में. ये 27%. अगर उसको 50% करना है तो मतलब इसको डबल करना है, लगभग डबल, मतलब ऑलमोस्ट 8 करोड़. दैट इज आवर टारगेट. अब वो कैसे करना चाहते हैं? आई थिंक सो मेनी स्पीकर्स दैट हैव स्पोकन ऑन दैट, कि हमें एक आउटस्टैंडिंग पब्लिक एजुकेशन सिस्टम बनानी है. अब देखो, ये बात नहीं कि गवर्नमेंट नहीं जानती व्हाट चैलेंजेस आर, या पॉलिसी मेकर नहीं जानते कि व्हाट चैलेंजेस आर. जानते कि every single stream college will be converted into multidisciplinary और मल्टी स्ट्रीम कॉलेज. जैसे कि आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स है तो वहाँ साइंस खोलना आपको जरूरी हो. उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज फॉर डिसएडवांटेज एंड अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट, न्यू यूनिवर्सिटीज आर वांटेड. Colleges will have option to run ODL courses and online courses, open and distance learning courses.
रन करने की आपको कॉलेज को भी अनुमति दी जाएगी। YCM इज वन ऑफ देम ओनली। उसके साथ साथ स्कॉलरशिप बाय प्राइवेट एंड philanthropist, encouraging private institution with high public commitment। ये जरा सोचने लायक बात है कि प्राइवेट पार्टनर देन विद हाई पब्लिक कमिटमेंट, ये कंट्रास्ट है। इट इज इटसेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी कि प्राइवेट वाले तो पब्लिक कमिटमेंट की बात ही नहीं करें। उसके बाद मोर कॉलेजेस विल बी सर्व्ड इन अंडर सर्व्ड रीजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एजुकेशन इन लोकल लैंग्वेज। उसके आगे जाते हैं, ये भी कहते हैं इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन। जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था कि हमारे पास जो अलग अलग टाइप के यूनिवर्सिटीज, अलग अलग टाइप, ब्रॉडली स्पीकिंग इन महाराष्ट्र भी से टेक्निकल यूनिव्हर्सिटीज अँड नॉन टेक्निकल युनिव्हर्सिटीज, तांत्रिक विद्यापीठ आणि तांत्रिक विद्यापीठ किंवा आपल्या पारंपरिक से पारंपरिक यूनिवर्सिटीज, व्हाट वी से ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी। लेकिन ये पॉलिसी बात करते हैं कि देयर विल बी ओनली 3 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटीज, मेडिकल यूनिवर्सिटीज एंड अदर यूनिवर्सिटी। अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं रही, टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिर्फ टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं रही, या फिर कोई और क्या कहते हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी अब सिर्फ संस्कृत यूनिवर्सिटी नहीं रही। ऑल विल बिकम द सेम। दूसरी एक बात है कि फेजिंग आउट ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस टू ADGC एंड कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजेस विद 15 ईयर, ये भी देखना पड़ेगा। आपके NAC एग्रीडेशन के बेस पे पहले कॉलेजेस को ADGC कॉलेजेस कहा जाएगा, दैट इज ऑटोनॉमस डिग्री कॉलेज, डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस ADGC, और बाद में उसको फिर कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज किया जाएगा 15 साल। दैट अगेन वी नो दैट RIU एंड TIU, that is research intensive universities and teaching intensive university। उसके बाद बात आती है कि how to make our education more holistic and multidisciplinary। हम जानते हैं कि there is an attempt that our universities should be modeled on our ancient universities like Nalanda, Takshashila, Vallabhi Vikramshila, so on and so forth। And what the education there will be offered on 64 कलास। अब वो कलास क्या है, so many skills आते हैं। उसके बाद बात आती है कि इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स विद साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये जरा दिक्कत का काम है। अगर आपने डॉक्यूमेंट पढ़ा है तो उसमें आपने एक लाइन सुनी होगी, मेन स्ट्रीमिंग वोकेशनल एजुकेशन। अब हमारे बच्चे इंजीनियरिंग का भी एजुकेशन हमारे कॉलेज में ले। See, now the engineering education or technical education will become the part of our mainstream education। Then वो तो हम जानते हैं कि flexible entry point and flexible exit point that we। उसके आगे जाता हूँ थोड़ा सा। Optimal learning and support to students। जैसे कि मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी दी जाएगी, कॉलेज को ऑटोनॉमी दी जाएगी, so and so forth। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ हुई है कि ड्रास्टिक चेंजेस इन द टीचर एजुकेशन। अब ये देख लेना, टीचर एजुकेशन पे इस NEP डॉक्यूमेंट में 2 या 3 पैराग्राफ्स, नॉट मोर देन दैट, बट 2, 3 or 4 पैराग्राफ्स आर गोइंग टू ब्रिंग a drastic change there। And what change is there? Please remember, now in every university education department will be there, and in every college possibly there will be a subject called education, and I am talking about at UG level and PG level। तो ये बात बनती है कि अभी इसके आगे स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन को DED कॉलेज कहते हैं, BEd कॉलेज कहते हैं, they will not or they will no longer exist। उसके बाद ये यहाँ हुआ है कि all PhD candidates will have credit course in teaching education। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक PhD कैंडिडेट को एक कोर्स वर्क करना पड़ता है, उसके साथ साथ अब उन्हें कुछ क्रेडिट्स को टीचिंग के करने पड़ेंगे। मतलब he will have to conduct some classes while pursuing his PhD। एंड जैसे कि हम बात करते हैं कि नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग सीनियर एंड रिटायर्ड फैकल्टी, ये भी थोड़ा दिक्कत करने वाला काम, दैट आई विल टॉक अबाउट इट लेटर।
technology, that we know that there is going to be a NETF, that is National Education Technology Forum, for giving advice, building technological infrastructure and giving new direction to research in education technology. जैसे कि मैंने मेस्टमी की बात की, लोक विद्या भी पढ़ाई जाएगी, NRF के बारे में हम जानते हैं कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में है, एंड एज मैम टॉक अबाउट प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर. जैसे कि यहाँ एक बात क्लियरली लिखी है कि नाउ इन एवरी यूनिवर्सिटी देयर विल बी अ संस्कृत डिपार्टमेंट. मोर फोकस इज ऑन संस्कृत. Then there will be other Indian classical languages also. Then teaching will take place in local language. ये कहाँ तक सच होगा वो भी हमें देखना पड़ेगा. Then traditional Indian knowledge system be used. उसके तो आगे जाके कहा है कि अब जरूरी नहीं कि कोई PhD होना चाहिए आपको पढ़ाने के लिए. कोई भी लोकल आर्टिस्ट आएगा और आपको पढ़ा पाएगा. इस सर्विसेज और हर सर्विसेज कैन बी हैड देयर. एंड ऑफ कोर्स this one thing is quite good there. There will be degrees in translation and interpretation. Now, ये तो हमारे बहुत सारे गोल है. But the question is how to achieve. अब हम बात करते हैं challenges. हमारे challenges क्या? NEP 2020 is prepared by central government. And my dear friends, central government has only 51 central universities. उसकी बात हमारी. Maximum load of higher education is on state affiliating universities and affiliated colleges. I should say almost 80%. 80% load of higher education is borne by the state governments. जैसे कि आप you can see the figure here. अगर हम आपका थोड़ा सा ध्यान यहाँ खींचना चाहेंगे, out of 3.85 crore, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है, please remember 3.06 crore are enrolled in UG only. Please remember. हमारा हायर एजुकेशन का डेटा लगभग 3.84 करोड़ है, लेकिन उससे से ज्यादा बच्चे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ही जाते हैं, पीजी में नहीं जाते. जैसे कि यहाँ मैं आपको नंबर दिखा रहा हूँ कि आउट ऑफ 3.85 करोड़, 3.06 करोड़, ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स आर टेकिंग एजुकेशन इन यूजी कॉलेजेस. उसके बाद भी हम देखते हैं तो प्लीज सी हियर, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे आर्ट्स में पढ़ाई करते हैं. लगभग 1 करोड़, 96.55 लाख. बीएससी में 48 है, बीकॉम में 45 है, एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 38.5. एंड पीएडी में, प्लीज माय डियर फ्रेंड, इन पीएडी देयर आर ओनली 2.2 लाख scholars registered for PhD, and that percent is 0.5. अगर हम परसेंटेज निकालते हैं उसका तो इट इज 0.5. देन जैसे कि मैं बात करता हूं एनरोलमेंट, सी लेट मी सी जस्ट वन लाइन. दिस इज द डेटा ऑफ आवर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 48 आर देयर. सेंट्रल ओपन इंस्टीट्यूट्स, सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटीज 1 only. Institute of National Importance 135. That number is 184 only. Please remember, out of 1043, today the number may be more. क्योंकि last year election हुई तो उसमें कुछ और यूनिवर्सिटी टिकी. तो out of almost 1100 universities, only 184 universities are controlled by, managed by central government. And see the number of the states. State public universities 386, और नंबर बढ़ सकता है. State open universities 14, and other institutes 5. That number is 405. Please remember, where is 200 and where is 204. उसके बाद बात आती है कि universities and institutes managed by private people.
and that number is good enough. That is 408. And named university there are 46. मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ कि central government manages only, I should say, fifth part of the university, 1/5 part of the university. State के पास उसका ज्यादा है. अगर हम उसकी enrollment की बात करते हैं, तो please remember here, out of the total enrollment, only 8.69% students are enrolled in centrally funded universities. They are centrally funded institutes. Only 8.6. And see the number in state universities, it is 68.96. And private में भी एक बड़ा नंबर है, that is 22.3. कहने की बात ये कि पॉलिसी सेंटर में तो बनाई गई, बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना है स्टेट, एंड दैट इज द बिगेस्ट इशू. अगर कोई स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट है तो दैट इज इजियर टू इम्प्लीमेंट. कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इट इज इजियर टू इम्प्लीमेंट है. मैं तो उसके आगे जाके कहता हूँ कि स्टेट यूनिवर्सिटी का कैंपस है, तो कैंपस में इट इज क्वाइट इजियर टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग. बट व्हाट अबाउट एफिलिएटेड कॉलेजेस? और लगभग जैसे कि मैं कह रहा था आपको कि ऑलमोस्ट 68% of our enrollment is in the state universities and affiliated colleges. अब स्टेट यूनिवर्सिटी की भी बात करेंगे, कैंपस की भी बात करेंगे, तो कैंपस में ज्यादा से ज्यादा 10,000 बच्चे हो. 10,000 बच्चे तो किसी बड़े कॉलेज में भी हो सकते. अगर किसी सिटी का बड़ा कॉलेज है तो द नंबर में भी 5,000 10,000. मुझे नहीं लगता कि आई डोंट वांट टू अंडरमाइन एनी यूनिवर्सिटी. हमारे यहाँ भी नॉट मोर देन 5,000 स्टूडेंट्स आर देयर इन द प्रेजेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी. नालंदा में हो सकता है कि 3-4 हजार बच्चे हो कैंपस. बट द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन affiliated colleges, and there is a big challenge. अब ये भी बात करेंगे हम, सीधे नंबर लगभग 42,343 कॉलेजेस आते हैं. मेरा कहने का मतलब यह था कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी स्टेट के कंधों पर, बिकॉज नंबर्स आर मोर. और जब कोई भी चीज ऊपर से निकलकर पर्कुलेट होते होते नीचे आ जाती है तो इट इज डाइट. द सेम मैं सीबीसीएस के बारे में तो आप बहुत सारे लोग अच्छी तरह जानते हैं. सीबीसीएस लिखते हैं, यूजीसी हैड मेड सीबीसीएस मैंडेटरी, लेकिन हुआ क्या उसमें, सिर्फ पीजी लेवल में उसको इम्प्लीमेंट किया गया, यूजी लेवल में किया ही नहीं. पीजी लेवल में किया तो क्या किया, दैट वी नो वेरी वेल. कहने का मतलब यह था कि such a vast country is there, such a vast number of institutions are there, such a vast number of enrollment is there, and it is very difficult to implement such policy. अब दूसरा एक इशू देखो, दूसरा इसमें दिक्कत क्या है, मुसीबत क्या है while implementing NEP 2020 in the country. And the most crucial issue today is the center-state relation. इसमें हम ज्यादा तो बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वन थिंग इज श्योर, लेट मी सेट एन एग्जांपल. एनईपी 2020 का इम्प्लीमेंटेशन यूपी में शुरू हुआ है, एमपी में शुरू हुआ है, उत्तराखंड में शुरू हुआ है. ऑल दीज स्टेट्स आर रूल्ड बाय द सेम पार्टी विच इज इन पावर एट द सेंटर. बट अदर स्टेट्स हैव नॉट स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग. जैसे कि महाराष्ट्र की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, और कुछ और स्टेट की बात करते हैं, वहां अलग पार्टी का रूल. मतलब ये भी मैटर करता है. दूसरी बात है कि बात पैसे की आती है. If political disagreement is there is possibility of disagreement on policy implementation. दूसरी बात और एक यहाँ है कि revival of Sanskrit and Indian knowledge tradition may be taken as a move to roll the wheels back. जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि हमें नालंदा को रिवाइव करना है, हमें विक्रमशिला को रिवाइव करना है. अब हमें हमारे लिए तो मुश्किल ये भी है कि हम इंडियन स्कॉलर के नाम भी नहीं बता सकते. We are so much colonized that we can have a good number of people from west. Aristotle, Plato, Socrates, and so many people we have. Good number of people are there.
आज तक भी हम बता सकते हैं, लेकिन इंडिया के जो स्कॉलर है जैसे कि गार्गी, मैत्री, चाणक्य एंड सो मेनी पीपल आर देयर, वराहमिहिर, बाणभट्टा एंड सो मेनी पीपल, these people are going to be introduced again. No, nothing wrong here. लेकिन उसके साथ साथ बात होती है कि संस्कृत भाषा को रिवाइवल, संस्कृत भाषा को हर यूनिवर्सिटी में कंपल्सरी बनाना। यहाँ बात हो सकती है कि देयर कुड बी अपोजिशन फ्रॉम मासेस। We know that why Sanskrit died. आप में से शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे कि संस्कृत is the state language of Uttarakhand. It is not spoken there. Please remember, it is not spoken there. It is the state language of Uttarakhand. Nowhere here Sanskrit is. Nowhere here Sanskrit is. हम संस्कृत तो हमारे बच्चे पढ़ते थे तो उसमें नंबर अच्छे आते है ना, हम स्कूल में देखते थे और 12th तक देखते थे कि बच्चों को नंबर अच्छे मिलते इसलिए पढ़ते थे। अब इसको यूनिवर्सिटी लेवल में या कॉलेज लेवल में उसको मैंडेटरी किया गया तो उसका हाल वही हो सकता है इस जो हाल हिंदी का हो। If you want to impose something, there will be some issue. And one more thing, maybe my perception is wrong. Perception ये है कि संस्कृत is the language of select few people. हम उसको प्रेस्टली क्लास कहेंगे, it is a Vedic language, so and so forth. And we know that other masses they are not allowed to educate in Sanskrit or learn Sanskrit. And we know what kind of injustice were done in part. We don't want to repeat it. We don't want to, I want to say, mention it here. हो सकता है कि this move may be taken as a move to saffronize education. ये बात हो सकती है। संस्कृत हिंदुओं की भाषा है। What about others? What about the Dalits? What about Christians? What about Muslims? What about Buddhists? They won't be ready. They won't be ready to accept this one. Another thing, जैसे कि मैंने कहा था कि टीचर एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और साथ साथ मेन स्ट्रीमिंग ऑफ वोकेशनल एजुकेशन होने जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि आपके कॉलेज की लड़कियां भी आपको इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ सकती है। अगर ऐसा होने लगा तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या करें, डीएड बीएड कॉलेज का क्या होगा, आईटीआई का क्या होगा, ये सवाल आगे बढ़ सकते। अगेन जैसे कि लैक ऑफ ट्रस्ट एंड वांट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑनलाइन। अभी भी हम ऑनलाइन एजुकेशन के लिए पूरी तरह हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप जरा परवने के बाहर जाके देख लीजिए हालात क्या है। बड़े सिटी में जाके तो बहुत कुछ मिले, लेकिन the things are very different in the rural part. There is no basic infrastructure. We cannot think of online and digital infrastructure. उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा इशू जो आजकल आ रहा है, that is vacant position in college and university. It is nearing about 40%. अब एक इसमें contradiction देखिए, हमें 2035 तक हमारा GR 50% बढ़ाना है। मतलब आज जितने बच्चे हर एजुकेशन में हैं 3.85 करोड़, उसको लगभग डबल करना है, मतलब 8 करोड़ बच्चों को हमें लाना है। लेकिन अब हमें नए कॉलेज नहीं निकालने हैं, अब हमें नई भर्तियां नहीं करनी है। मतलब ऑन वन हैंड वी डोंट वांट टू डेवलप और वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सिटी, वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन व्हाट वी से कॉलेजेस। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, आपको कॉलेज लेना है, चलो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज ले। हमें विश्व गुरु भी बनना है, पैसे भी खर्च नहीं करना। So many things are there, and finally, of course, these are the issues. But the final solution for all these issues is there is one solution. आप में से कुछ लोग फाइनेंस के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। सेंटर इज ऑलवेज रिचर देन द स्टेट्स। I repeat it, center is richer than the state in financial assets. बहुत सारे स्टेट आज सैलरी भी नहीं दे पाते एम्प्लॉयज की, लेकिन सेंटर के पास बहुत सारा पैसा। और कुछ स्टेट में जैसे नए नए जुमले निकले, परमानेंट नॉन ग्रांट कॉलेज ले लो, सेल्फ फाइनेंसिंग ले लो, प्राइवेट ले लो, ये ले लो, सिर्फ बच्चे हमें एनरोल करने, उसका आगे कुछ करना। So my solution to all these issues is that if the center
I don't mean center means any political party or government. If the policy makers want that this policy be implemented in toto and the outcome that we have kept there want to be achieved, want to be earned, there is only one solution, that the center should take over or bear the burden of higher education of all over the country. आप कहोगे कि हमें यूजीसी पेमेंट करती है, हम में से बहुत सारे लोगों का आज भी परसेप्शन है कि हमारा पेमेंट तो यूजीसी करती है. नो, इट इज रॉन्ग. जब पे कमीशन आता है, नया आता है ना, तो ओनली फर्स्ट 5 year expenditure is borne by the central government and the next 5 year expenditure is borne by the state government. And sometimes the state government is not in position to bear that burden. तो उसका एक रामबाण उपाय ये है कि हायर एजुकेशन का सारा खर्चा सेंटर उठाए और एंड स्टेट मस्ट बी लेफ्ट विद द स्कूल एजुकेशन. सिंपल भाषा में 12वीं तक का जो भी एजुकेशन है, उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रिक्रूटमेंट होगा, वो सिर्फ स्टेट देगी और उसके बाद का जो भी है हायर एजुकेशन कहते हैं उसको सेंटर उठाए. क्योंकि हम जानते हैं जो पैसा देता है उसकी चलती, जिसके हाथ में लाठी उसकी बहन बोलते हैं ना. जो पैसा देता है, देखो हम यूनिवर्सिटी की बात उतनी नहीं मानते जितना हम जॉइंट डायरेक्टर की बात मानते, क्योंकि वो सैलरी पेइंग, वो पेमेंट डिसबर्सिंग अथॉरिटी. तो माय लास्ट थिंग इज दैट if the central government is ready to bear the burden of the education in the whole country and state governments are left with the school education, to some extent this policy can be, the target can be. Thank you very much. I know that I took more than time. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Now the session is open for question and answer. I request the participants, if you have any question, then you can ask to Dr. Bedre, sir. You can write your question in chat box as usual. In question answer session, there is 2 possibilities are always spoken of, and the first one is always Sir, there is one question from Zahur Yes. Ahmad, sir. His question is, what are the budgetary provision made by Center for Deemed Universities? Deemed universities. my dear friend. In time to come, there will be no such university called deemed university. Yes. No university called deemed university. अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो अपने फंड खुद जुटाए, बनाए और चलाए. नॉट एट ऑल. जैसे कि मैंने कहा कि अब अलग से कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी, अब अलग से कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी. जो भी यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप यू आर इन परवनी, आज हमारे इन सोलापुर, तो परवनी की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिर्फ एग्रीकल्चर का एजुकेशन नहीं देगी. हो सकता है कि आने वाले टाइम में परवनी सिटी के और एक आधा जिला उसको जोड़ के उसको एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा. वो आर्ट्स साइंस का भी देगी एजुकेशन, वो इंजीनियरिंग का भी देगी, वो एग्रीकल्चर का भी देगी, वो लैंग्वेज का भी देगी. एंड आफ्टर ऑल दीज आर द स्टेट यूनिवर्सिटी. अब रही बात आपका जो बेसिक सवाल था कि हम जीडीपी के 4% भी आज भी खर्च नहीं करते. दैट इज व्हाट वी से $1 billion क्वेश्चन. आज भी हमारा खर्चा एजुकेशन पे बहुत कम है, बट we hope that in time to come it will be raised. Thank you. So this issue that you raised is very important, that why should not the central government absorb the expenses of higher education? That is actually crucial because our population, our diversity, these are the crucial issues in implementing this national education policy. And we all have started, no doubt, everywhere.
It has been the preparations for the implementation are being made, and we all are running after the national education policy and its effective implementation. But these are the hurdles, or these are the crucial points that our population, our huge masses, and our diversity don't know how much time will take in tackling or overcoming these issues. तो मैडम, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, हम में से कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट को वेरी केयरफुल पढ़ा? यस, पहले उसको समझे, अगर उसको समझे तो फिर दिक्कतें क्या है इसके बारे में चर्चा। यस, एब्सोल्युटली। Now our policy makers in the states have begun to think about it. I don't know whether there has been any meeting of that committee or not. Yes. And जैसे कि मैं कहता हूँ कि political will matters most in the country. गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकते, चाहे तो कुछ भी कर सकते, माँ बाप सरकार है, anything can be Yes, done. yes, sure. Yes. लेकिन So what there- I say, वैसे कि मैंने शुरू में कहा कि सेंटर has more funds than the states. अगर सही में हमें क्वालिटी लानी है, उसको टोटो हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रिक्रूटमेंट की बात हो, जैसे कि मैंने कहा ना शुरू में कि 1948 की कमेटी का और 64 की कमेटी का भी ये सुझाव था कि देश में हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन बनाया जाए। जैसे हमारे पास यूपीएससी का आईएएस है ना, एंड फिर फॉरेन सर्विसेज है, हमारे पास रेवेन्यू सर्विसेज का है, तो व्हाई शुड नॉट वी हैव a commission to recruit the people in higher education like national or union education service commission? But no, पिछले 70 साल से हुआ नहीं, आगे होने की भी संभावना नहीं है। But we need fund to be piped. फंड के बिना तो बात नहीं। Yes. क्योंकि क्या है, हमें कॉलेज भी नहीं बढ़ाने हैं, लेकिन हमारे जीआर बढ़ाना है, हमें टीचर भी रिक्रूट नहीं करने हैं, क्वालिटी एजुकेशन भी देना है। So these are some contradictions, no sir? Contradictions. हमें आपके कॉलेज में साइंस डिसिप्लिन तो खोलनी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको सेल्फ फाइनेंसिंग मोड पे खोलने के लिए देगी। तो आपका क्या परसेप्शन जो हो सकता, हम लोग मैनेजमेंट के बारे में लाख बुरी बातें कहते, लेकिन if some of you are associated with management, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट की बात, किसी भी कॉलेज को महाराष्ट्र गवर्नमेंट डेवलपमेंट फंड के नाम पे 1 रुपया तक नहीं, सैलरी एंड सम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप के नाम पे या ट्यूशन फीस के नाम पे या अदर अलाउंस के नाम। लेकिन मुझे याद नहीं कि आपके कॉलेज को, एक महिला का कॉलेज के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए दिए। नो, यूजीसी देती तो वो कितना देती, 5-10 लाख, अब तो वो भी बंद हो चुकी। तो मतलब साइंस फैकल्टी हमें आपके कॉलेज में तो खोलनी है, लेकिन परमानेंट ऑन कैंपस बेसिस पे खोलनी है, तो उसके लिए टीचर कहाँ से लाए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाए, बुक्स कहाँ से लाए, इक्विपमेंट कहाँ से लाए। अगर ये चीजें नहीं होती तो क्वालिटी कैसे आएगी? मतलब पैसा भी नहीं देना और क्वालिटी भी लाना। मराठी में से ना, बाप खाऊ देत नाही, माय भीक मागू देत नाही, शर्ट that is the thing there. Yes, absolutely. Yes. Yeah, anything else? Yes, sir. There is one more question from Dr. Ashok Kadam, sir. And his question is, sir, he said that higher education comes under concurrence list. How do you validate your solution? Education comes under concurrence list. Education, not higher education. Now, एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। रिसेंटली एग्रीकल्चरल व्हाट वी से किसान कानून, एक्चुअली कृषि और फार्मिंग और एग्रीकल्चरल इज द लिस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको फाइनेंशियल बिल बनाया, फाइनेंस का बिल बनाया और वहां पास। Though it is in the concurrent list, every time
our constitution, our provisions are made in such a way that the center has power to supersede the state rule or state power anytime. कभी भी उसको वो सुपरसीड कर सकते। अगर अच्छे के लिए करो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं जब कह रहा था ना सर कि उसको मैं सोल्यूशन दे रहा, मैं कह रहा था कि उसका जो फाइनेंस है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो रिक्रूटमेंट है, वो सेंटर अपने हाथ में ले ले। इम्प्लीमेंटेशन स्टेट के लिए करो तो कोई बात नहीं, implementing authority may be state, executing authority may be state, but the financial authority should be the central government, कि पैसा वहां से आना है और बिना पैसे के कुछ नहीं। और दूसरी बात जैसे मैं कह रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट को हायर एजुकेशन भी चलाना है 5 साल और स्कूल एजुकेशन का भी पूरा चलाना है, और एजुकेशन की हालत हमारे पास क्या जा, मेरा सुझाव कहने का मतलब, मेरी सोच ये थी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ स्कूल एजुकेशन देखती है तो the state governments will be in a better position to bring some changes there, and the state government will be free from the financial burden of the higher education if the higher education is taken over by the central government. सुझाव तो बहुत बड़े आते थे, हम ऑटोनॉमी को भी डरते हैं, हम एकेडमिक ऑटोनॉमी को भी डरते हैं, तो इट इज नॉट मैटर। जैसे कि ये बहुत ही डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ, लेकिन उसको मैं थोड़ा अदर मायने में भी मैं देता हूँ। प्राइवेट पार्टनर्स, इस पॉलिसी में प्राइवेट पार्टनर्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। फिलैंथ्रोपिस्ट, the word is used there, philanthropist, the NGOs or the people of the society who run something on no profit, no loss basis. ये मुश्किल है प्राइवेट पीपल को बोलना कि आप कॉलेज चलाओ लेकिन पैसे ना कमाओ, दैट इज क्वाइट इट। हाँ, लेकिन उसमें उसका एक वाइट साइड भी ये है, ब्राइट साइड ये भी है कि मुझे एक सेंटेंस बहुत याद आता है, शायद JRD टाटा जी का था। तो नेहरू जी को उन्होंने गुस्से में आकर कहा था कि गवर्नमेंट एरोप्लेन कंपनियां ना चलाए, गवर्नमेंट चलाए। सरकार को चाहिए कि वो सरकार चलाए, वो बसेस ना चलाए, वो हवाई जहाज ना चलाए। कहने का आज हम हालात में एयर इंडिया बेच, जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग हमारे वो घाटे में चल रहे। कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें गवर्नमेंट नहीं दे सकती। इन केस ऑफ गवर्नमेंट देयर इज द इश्यू ऑफ मॉनिटरिंग, देयर इज द इश्यू ऑफ गवर्नेंस। ऐसा क्यों हो जाता है कि जो कंपनी अब तक गवर्नमेंट के पास थी तो घाटे में चल रही थी, और 6 महीने में वो प्राइवेट के पास जाती तो प्रॉफिट में आ जाती। इश्यू ऑफ द गवर्नेंस, इश्यू ऑफ द पॉलिसी मेकिंग। कहने की बात मेरी ये थी कि आप महाराष्ट्र की बात करें, इसकी थोड़ी में ब्राइट साइड है। हमारे महाराष्ट्र में more than 90% colleges are run by private money. Of course, they are grantee aided college. उनको कहते हैं grantee aided college और aided college. But उसका मैनेजमेंट तो प्राइवेट है, लेकिन सैलरी एंड अदर थिंग्स आर बोर्न बाय द। आपको पता है क्यों लाया गया था? Why it was given momentum? इसको ज्यादा बढ़ावा कब दिया गया? In the 70s, 1970s, 70 की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस 70 के बाद निकले। क्यों दिया था मालूम है? मैंने कहीं तो भी पढ़ा था, शायद इन मराठी देयर इज अ वंडरफुल बुक, यशवंतराव विलासराव बाय मधुकर भावे परात, रीडिंग दैट। बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे थे महाराष्ट्र में, और हमारे पास इंजीनियरिंग नहीं थी। महाराष्ट्र में इंजीनियर नहीं थे, हमें कर्नाटक से मंगवाने पड़ते। तो वसंत दादा पाटिल वो चीफ मिनिस्टर थे, तो बोले हमारे पास ऐसा क्यों है कि इंजीनियर नहीं है, हमारे पास कॉलेज नहीं है। कॉलेज क्यों नहीं है? हमने निकाले ही नहीं है। एंड रिमेम्बर, वसंत दादा पाटिल वाज सच अ वंडरफुल पर्सन। आज ये इसके प्लेटफॉर्म में इसका एग्जांपल देने का, लेकिन फिर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि अगर पॉलिटिकल विल है तो कुछ भी हो सकता है। एक बार वसंत दादा पटेल अपने घर में बैठे थे,
maybe in Mumbai or Sangli. And a new married couple came there, newly married couple from maybe constituency, Sangli से आया. उन्होंने पूछा क्या करते हो बेटा? मैं बोला टीचर हूँ. वाइफ क्या करती है? टीचर है, वो भी टीचर है. तो फिर अब क्या बोले सर, वो अलग जिले में काम करती है, मैं अलग जिले में काम. एक साथ नहीं ले जा सकते. बोले नहीं बोले. तो वसंत दादाजी ने उनके पीएस को बुलाया, जो भी सेक्रेटरी होगा. ये क्या है सर? ये रूल है. बोले ये क्यों नहीं ला सकते? रूल नहीं है. तो वसंत दादाजी उनकी तरफ देखा, बेटा रूल कौन बनाता है? रूल कैसे बनता है? सरकार को बनाना पड़ता है. तो वसंत दादा ने बोला कि सरकार तेरे को कह रही है कि ये रूल बना, और उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ को एक जिले में रखने का या एक जगह रखने का रूल जिला परिषद स्कूल में आया. अगर सरकार चाहती, पॉलिटिकल विल चाहती, तो कुछ भी हो सकता है. कहने का उसी टाइम, मेरा कहने का मतलब ये था कि उस टाइम में वसंत दादा रियलाइज दैट गवर्नमेंट कांट डू एवरीथिंग, देयर शुड बी पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑल्सो. देखो आप जिला परिषद स्कूल का डिसिप्लिन देखो और प्राइवेट का डिसिप्लिन देखो. अगर मैनेजमेंट का प्रेसिडेंट कॉलेज में आ जाए तो सारे वक्त पे आने लगते हैं. लेकिन जेडपी स्कूल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां कोई प्राइवेट पर्सन है ही नहीं. मॉनिटरिंग बेटर होती है. उसी के बहाने वसंत दादा पाटिल ने यहाँ प्राइवेट कॉलेज की बात लाई थी. आगे चल के उसमें कुछ लोग फॉल आ गए, उसमें बहुत सारी चीजें आ गई. आई डोंट डिनाई. मैं उसी को लेकर आगे कहता हूँ. प्राइवेट यूनिवर्सिटी की आपने बात की थी. देयर आर सम गुड प्राइवेट यूनिवर्सिटी. आप भारतीय विद्यापीठ पुणे की बात लीजिए, आप डी वाई पाटिल की बात लीजिए, आप टाटा इंस्टीट्यूट की बात लीजिए. These are the people, these are run by private people. और दूसरी एक बात, अगर मैं आपके मान लीजिए कि आपके परभनी सिटी में आपका पूरा इंटेक, आपके सारे कॉलेज का इंटेक मान लीजिए कि 10,000 का, और मान लीजिए कि बच्चे 15,000 पास, बाकी के 5,000 बच्चों ने कहा. अगर वही कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुलता है, तो हो सकता है कि 150 बच्चे वहां एडजस्ट हो जाए. और प्राइवेट में मैं ये भी जानता हूँ कि प्राइवेट में अमीरों के बच्चे जाएंगे, जाने दो. अगर अमीर लोगों के बच्चों को प्राइवेट में जाने का ऑप्शन नहीं होगा, तो वो इसी गवर्नमेंट फंडिंग इंस्टीट्यूट में रहेंगे, और निचले जो 5-10 बच्चे पुअर फैमिली से आके वो नहीं आ पाए. सो आई लुक टुवर्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन दैट. अब ये गवर्नमेंट को देखना है कि हाउ टू कर्ब द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द मनी देयर. ये गवर्नमेंट को देखना है. सो there is nothing wrong in the participation of private partners in hiring. हर जगह हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? बट क्वालिटी शुड बी मेंटेन. अब मनी मेकिंग तो उसमें होनी है. अब दिक्कत ये होती है कि उन्हीं लोगों की प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट इंस्टीट्यूट होती है जो पावर में होते हैं. पावर में वही होते हैं, तो they make the rules according to their own convenience. And money making is there. But please remember, no system is fault. कोई भी सिस्टम completely fault free होती नहीं. कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें होती है. We have to see what balance we can. I hope I answered your question, Ashok. Thank you, sir. Thank you. Now the question answer session is over. And I express my sincere thanks to Dr. Bedre sir for his thought-provoking, insightful, and realistic speech about implementation of national education policy. Actually, sir, you have guided us in many details. Thank you, sir. Now, over here we have arranged participants' remarks as well. And for this, I request Dr. Jaya Badi, madam. She is from Department of Psychology, Saraswati Mandir Knight College of Commerce and Arts, Pune, Maharashtra State, to record her remark. Dr. Abhijit Sarnaik, sir, please unmute Dr. Jaya Badi, madam. Hello. Yes, Hello. you are audible, madam. Yeah. Thank you, madam. लेट सौ कमलाताई जामकर महिला महाविद्यालय परभणी यांनी 6 दिवसाचा जो FDP कार्यक्रम आयोजित केला त्याबद्दल त्यांचे
आभार आणि धन्यवाद दोन्हीही. आभार ह्याच्यासाठी की त्यांच्यासाठी त्यांच्या कॉलेज पुरता हा कार्यक्रम नेहमी ते करत असत, पण हल्ली अलीकडे त्यांनी सगळ्या लोकांसाठी हा खुला मंच केला, त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्याच्यात हा जो काही आता आपला नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी चॅलेंजेस अँड अपॉर्च्युनिटी इन HEIs हा आता बदल जो काही आता शैक्षणिक विश्वामध्ये जगामध्ये जो बदल होऊ घातलेला आहे, त्याच्यासाठी हा प्रत्येक टीचर्ससाठी पूर्वतयारी करण्यासाठी म्हणून हा चांगल्या पद्धतीनं सुरळीत पद्धतीनं या महाविद्यालयांनी कार्यक्रम आयोजित केला, त्याबद्दल धन्यवाद. प्रत्येक वक्त्यांनी त्यांना जो काही विषय दिलेला होता, तो प्रत्येक विषय जो आहे तो त्यांच्या ओघवत्या वाणीत अगदी महत्वाचे मुद्दे, नवीन मुद्दे त्याच्यात आम्हाला समजले. आणि मला असं वाटतं की आम्ही जेव्हा म्हणजे वाचतोच आहोत पॉलिसी, जसं आता बेद्रे सरांनी सांगितलं की ती पॉलिसी नीट वाचा, हे वाचताना आम्हाला हे प्रत्येक सेशन्स जे आहेत ते चांगल्या समजून घेण्याच्या दृष्टिकोनातून नक्की मदत होईल असं मला वाटतं. धन्यवाद मॅडम, मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल. थँक्यू. Thank you, madam. Now I request Dr. Mahendra Kumar sir, Guru Nanak College, Autonomous College, Velachery, Chennai, to record his remark. Dr. Mahendra Kumar sir. Yes, madam. Madam, am I audible? Yes, sir, you are audible. Yeah, thank you very much. Respected Dr. Sangeeta Avachar, Vice Principal, late Sau Kamaltai Jamkar Mahila Mahavidyalaya Parbani, convener and organizing committee members of this online FTP on implementation of NEP, challenges and opportunities in higher education institutions. That was held from 24th August 2022 till 30th August 2022, that is today. Good evening, one and all present here. I am Dr. Mahendra Kumar from the Department of Biotechnology, Guru Nanak College, an autonomous institution affiliated to the University of Madras, Chennai, Tamil Nadu. At the outset, I take it a privilege, a proud privilege to thank the organizers for planning such a nice and well-planned FDP. A big hats off to all the special, especially my appreciation goes to Dr. Om Prabha Lohakarai Madam, the IQAC coordinator and the convener of this FDP. My sincere thanks to all the learned resource persons. Dr. V.B. Patil, who spoke on National Education Policy, Catalyzing Quality Research. Dr. Vani Laturkar, who spoke on overview of NEP. Dr. S. Shankar, who spoke on NEP 2020, the road ahead for higher education in India. Dr. P.N. Prabhakar, who spoke on some views on promotion of Indian languages, arts and culture. Dr. Ruta Dharmadikari, who spoke on skilling graduates the NEP way. And finally today, we have with us Dr. R.T. Bedre, who very well spoke on decolonizing the higher education system and NEP. I personally feel that all the sessions of this very well organized FDP was very informative, useful, and it is need of the hour. When we are in a time where many higher education institutions still find it very hard to implement, or how they are going to implement NEP 2020, and have many doubts with the same. I would personally understand and learn many things about the various aspects of NEP 2020 and its importance for the betterment of higher education in India. I thank the organizers for giving me an opportunity to participate in this nice, well-organized FDP, and also for giving me a chance to express my views today. Thank you all. Jai Hind. Thank you, sir. I now request Dr. Sangeeta Avachar madam to deliver her presidential address. Thank you, dear Lohakare madam. Good evening, one and all. In this online FDP organized by IQAC of late Sau Kamaltai Jamkar Mahila Mahavidyalaya Parbani. This has been the valedictory program that we all are attending from 4 p.m. today. Honorable dignitaries on this virtual platform present for this FDP, and all the esteemed participants, resource persons who have attended
this FDP right from 24th August. The honorable directors of our institution, the patrons, the president, vice president, the secretary, the deputy secretary, and the treasurer of our institution, that is Nutan Vidya Mandir Education Society, Parbani, the principal of our college, Dr. Bhosle sir, and the whole and soul, the most prominent woman behind this FDP, who has made it all the way possible with the help of her IQAC team, my colleague, Dr. Om Prabha Lohkare madam. The resource person, today's resource person, a very renowned academician, Dr. R.T. Bedre sir, who has been presently working as the director of UGC-HRDC, Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya Sagar. The resource persons who have been attending this FDP right from the first day, and all the esteemed participants, the delegates who have joined this FDP right from across the country. We are here towards the conclusion of this FDP. We have been thoroughly enlightened by the mesmerizing speech of today's resource person, Dr. Bedre sir, who seems innovative every time he spoke on different occasions. At the same time, his fruitful, enlightening, informative, and innovative assurance that we are going to do very well with this NEP, that was the most important, the message of this today's valedictory program. No doubt there are certain questions regarding the implementation of national education policy, and the most important in these things matters the center-state relationship, as it has been propounded by Bedre sir. There are too many questions that decolonizing education, decolonizing higher education. At the same time, we all are heading towards globalization. We are becoming more and more global, and at the same time, we want to decolonize the higher education. These things needed the few characteristic features from all of us, what we are termed as the academicians, that we need to collaborate, we need to cooperate, and we need to exchange our views regarding the national education policy. What is effective, what we need to implement, we certainly have to deal with these things in a very substantial manner. That is what is needed for the effective implementation of this national education policy. And in this regard, Dr. Bedre sir had guided very well. No doubt, decolonizing the Indian education, higher education, and finding out the roadmap, preparing the roadmap to reclaim the Indianness through this national education policy, we need to re-articulate the, our cultural values. We need to inculcate our cultural values, and it has been expressed, the thought has been expressed by Bedre sir very well. His talk was itself a crystal clear document regarding how we can effectively implement this national education policy. All of us have attended right from the first day. I also love to attend each and every of the session, and I'm always with my colleague, Dr. Lohkare madam, and on behalf of our college as well, I'm always there to attend different events. Those are organized by our IQAC. I congratulate our IQAC team, the leader of which Lohkare madam and Jadhav madam is there. Dr. Abhijit Sarnaik is there. Mahesh Jadhav also is there. All the team, entire team of our college always takes great efforts to make it happen this way, in what way it has happened today. We are always here to share our views. We are always here ready to collaborate, to cooperate regarding the national education policy wherever the demand is.
We are ready to provide the expertise as well. We are ready to accept your views as well, as it has been conveyed by Bedre sir, that it is the essential step that we should go thoroughly through this national education policy document. Actually, I have been gone through this education policy document 2 times, but still I need to go through it once again and again, and all of us, we have to go again and again through this education policy for its effective implementation, by overcoming the lacunas, by overcoming the drawbacks, how we can put it for the welfare of higher education, for the betterment of the target group, that is the stakeholder, our students. I thank you very much, madam. I express my gratitude towards you for making me the chairperson of this session, for making me chair this session. I express sincere thanks to all the dignitaries who have participated in this National Education Policy FDP. On behalf of our college, I express a deep sense of gratitude towards all the esteemed dignitaries, the resource persons, the delegates who have been the part of this seminar. And it's over to you, Lohokare madam, right now. Thank you. Thank you, madam. Now I am here to express vote of thanks. But before vote of thanks, I would like to make 2 announcements. First is related to the certificates. I request all the participants, all the participants will have to submit the overall feedback of the FDP. The feedback link will be shared after the completion of valedictory program of the FDP on WhatsApp groups. You will get certificates 2 days later. Certificates will be issued to those who attended all the sessions and filled daily feedback. The organizing committee will check all these things, and then the certificates will be issued. And my second announcement is the valedictory program will be concluded with the national anthem. So now I am here for vote of thanks. First of all, I am very much thankful to the chief patrons of the institution, Honorable Shri Hemant Rao Ji Zamkar Sahib, the President, Nutan Vidya Mandir Education Society, Parbhani, Honorable Advocate Shri Kiran Rao Ji Subedar Sahib, the Vice President, Nutan Vidya Mandir Education Society, Parbhani, Honorable Shri Abhay Subedar Sahib, the Treasurer, Nutan Vidya Mandir Education Society, Parbhani, Honorable Shri Vijay Rao Ji Zamkar Sahib, the Secretary, Nutan Vidya Mandir Education Society, Parbhani, Honorable Dr. Sanjay Ji Takalkar Sahib, the Joint Secretary, Nutan Vidya Mandir Education Society, Parbhani, Honorable Dr. Vasant Bhosle Sir, Principal, late Sau Kamaltai Zamkar Mahila Mahavidyalaya, Parbhani, Honorable Dr. Sangeeta Auchar Madam, Vice Principal, late Sau Kamaltai Zamkar Mahila Mahavidyalaya, Parbhani, for granting us permission to organize this online national level 1-week faculty development program. I express my sincere thanks to all the resource persons for joining with us for all this valedictory program. I express my sincere thanks to Honorable Dr. R.T. Bedre sir, chief guest as well as a resource person of this valedictory program as well as session, for accepting our invitation and delivering his speech on decolonizing the higher education in India and NEP. Thank you, sir. I express my sincere thanks to all the participants who joined with us for this valedictory program. Then I express my sincere thanks to all the teaching and non-teaching staff for joining with us for this program. I also express my sincere thanks to Dr. Abhijit Sarnaik sir for providing technical assistance. Last but not least, I express my sincere thanks to those who helped directly and indirectly for making this event successful one. Now I request all of you to stand up for national anthem, and I request Dr. Pallavi Kulkarni madam, Assistant Professor of Music of our college, to sing the national anthem. Dr. Pallavi Kulkarni madam, over to you. मैडम आवाज येतोय? Yes madam, आवाज येतोय. ओके, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि राष्ट्रगान के लिए अपनी जगह पर खड़े रहें। जन गण मन अधिनायक जय
भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय वंदे मातरम। धन्यवाद। Thank you, one and all. madam. Thank you, one and all, for joining with us. I would like to conclude this FDP with one quote. Show must go on. Now this is the beginning. This is the beginning. Show must go on. With this, with the permission of the president, I declare that the session is over. Thank you. Thank you, one and all.